Look at me now. Look at me now. Yesterday, a homework was given to you. Homework was given to you to do the questions. But I'm very sure that you have not done it. I'm very sure that you have not done it because हम आपको अंदर से और बाहर से पहचानते हैं. हम आपको अंदर से और बाहर से पहचानते हैं. कल हमने कितने पार्ट्स पूरे किए थे इसके? How many parts did we finish yesterday? How many parts had we completed from this yesterday? 3. So look at the fourth part. Look at the fourth part. And the fourth part being between 60 and 70 inches. Between 60 and 70 inches. So 60 and 70 inches is going to be probability of 60 is less than or equal to x is less than or equal to 70. So probability of this is 60 minus 66 and that over 5 less than or equal to x minus mu over sigma less than or equal to 70 minus 66 and that over 5. So that is equal to probability of minus 1.2 less than or equal to z less than or equal to 0.8. ये तुमको समझाएगा. ये तुमको समझाएगा. ये तुमको समझाएगा. So what I have to do is now this is minus 1.2. Listen, this is minus 1.2. This is minus 1.2 and somewhere out here is 0.8. अभी मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए. I want this area. तो मेरा सिंपल सवाल है. Table gives which area? Tell me table gives which area? Table gives which area? 0 to something. Table gives the area 0 to something. And therefore what I can now do is I can find this area from the table, this area from the table, and then I can add these. I can add these two areas. There is no mathematics here, you just have to go by the common sense, and therefore this is table value for minus 1.2 and plus table value for 0.8 is going to be the answer that you want. Is going to be the answer that you want. Now my question is, tell me for 1.2 what is the table value? Table value for minus 1.2 is same as table value for 1.2. तो मेरा तुमको सवाल है कि टेबल वैल्यू फॉर 1.2 कितना है? 1.2 की टेबल वैल्यू कितनी है? 0.3849. 0.3849 ना? 3849 and that plus 0.8 की टेबल वैल्यू कितनी है? This is 0.2881. अभी इसका टोटल करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलेगी. इसका टोटल करेंगे तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुमको मिलेगी. So that is 0.673. Therefore 0.673, that means 67.3% is the probability that you want. Forward and back. This is the probability that you want. Now if that is true, then I consider the fifth question. Read and understand what is the fifth question. Read and understand what is the fifth question. पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो 55 and 62. 55 and 62. बरगा 55 and 62 है. 62 नीट पडेल काय? 62 तर टी आहे ना, तो असा ऐकू आला पाहिजे 62, नाही तर ते नहीं तो फिर गडबड होता है. 62 असं नीट म्हणणे का? तो क्या था? This is probability of 55 less than or equal to x
less than or equal to 62. Abhi, that means this is equal to probability of 55 minus 66 over this is 5 less than or equal to z less than or equal to 62 minus 66 that over 5. So tell me this is probability of what? Minus 11 means minus 2.2 less than or equal to z and less than or equal to minus 4 means minus 0.8. बढ़ाना है करोगा ये तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? अभी क्या होता है देखो जीरो के बाद पहले कौन आएगा 2.2 आएगा पॉइंट एट आएगा माइनस पॉइंट 2.28 आएगा या माइनस 0.8 आएगा. So this minus 0.8 is here, minus 0.8 is here, and minus 2.2 is here, and I want the area in between. I want the area in between. I want the area in between. अब तुम मेरे को बोलो कि इसको तुम कैसे निकालेंगे. तुम इसको कैसे निकालेंगे बोलो. बोलो कि तुम इसको कैसे निकालेंगे. All what you can do is that you can find this entire area and then minus this much area. So it is stable value for minus 0.8, minus 2.2 and minus stable value for minus 0.8. पर इसका मतलब ही टेबल वैल्यू फॉर 2.2 होगा और इसका मतलब ही टेबल वैल्यू फॉर 0.8 होगा. अभी 2.2 की टेबल वैल्यू बोलो. 2.2 की टेबल वैल्यू बोलो is 0.4861 is 0.4861 minus 0.2881. डिफरेंस बोलो कितना आता है. is 19.8%. Is that 0.198? That means 19.8% people. क्या मतलब है इसका? 19.8% people have height between 55 inches and 62 inches. चिकन कर दो. ये इसका मीनिंग हो गया. This is the meaning of it. The next one you want is less than 58. 60 is what you want less than 68. More probability 58 means probability of x is less than or equal to 58. देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये इक्वल टू लिखो नहीं तो इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. So this is x is less than what they want is what do they want x is less than 58 but convert this x to z. So it is probability of z is less than this is 58 minus 66 and that over 5. So it is probability of z is less than or equal to what is this? Minus 8 by 5 means minus 1.6. That means they want the area. This is 0. Somewhere here is this minus 1.6 and less means left. So they want this area. But we know this is the table value. We know this is the table value. So tell me what is the adjustment? This we want and we know the table value. So it is 0.5 minus table value for 1.6. 1.6 and minus 1.6 सेम ही होता है तो 0.5 minus बोलो is 0.4452. 0.4452. You get an answer. 0.0548.
0.0548, that is 5.48%. बाळांनो ये तुमको समझा है क्या? दिस इज 5.48%, ये तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? हो असं म्हणणं, असं नाही म्हणायचं जानवी, हो एवढंच म्हणायचं. And the last part is, probability of Z is greater than or equal to. Tell me, they want probability of Z is greater than or equal to, I mean X is greater than or equal to what? 66. That means this is equal to probability of Z is greater than or equal to 66 minus 66, that over 5. That means they want probability of Z is greater than or equal to 0. Means this is 0 to infinity. So they anyway want the full half area. They want this half area. And because they wanted half area without any adjustment or even without using the tables, you can say this half area is 0.5. That is 50%. That is 50%. हो गया है क्या? तुम्हारा आंसर आया है क्या? कोई शक? कोई शक? Any doubts? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने डिस्कशन के बाद डिफिकल्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है. तो अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन था तुमने किया है क्या? सेकंड क्वेश्चन तुमने किया है क्या? सिर्फ उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने का है. तो इसकी आंसर्स तुम चेक करो. इसकी आंसर्स तुम चेक करो. When you want number of people, multiply by 1000. And when you want percentage, you just have to multiply by 100. तो हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स है. One you have to multiply by 1000 and one you have to multiply by 100. इस आंसर्स को चेक करो. देखो मेरा तुम्हारे पहले हो गया. मेरे आंसर्स भी आ गए डायरेक्ट. डायरेक्ट आंसर मिल गए मेरे को. तुम्हारा अभी नहीं हुआ है. हम सर है, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है. आप सर है ऐसा मत बोलो जानवी ब्रो. ऐसा बोलो, ऐसा बोलो कि आपको सर है, हमको सर नहीं है. आप सर है ऐसा मत बोलो, आपको सर है. मारी की नहीं. ये वर्ड्स को ट्विस्ट करेंगे तो कितना अच्छा होता है. वर्ड्स को ट्विस्ट करेंगे तो कितना अच्छा होता है. एकदम फैक्ट क्या है वो सामने आती है. थोड़ा सा वर्ड्स क्या चेंज कर दिया, हमें वस्तु स्थिति का एहसास हो गया. FY BCom का एग्जाम हो गया क्या तुमका? कौन सा पेपर था आज? आज कौन सा पेपर था? अकाउंट्स जमा का कुछ जमा का? 20 मिनिट मध्ये ओव्हर. घर में बैठ के सॉल्व करना था क्या? घर में बैठ के सॉल्व करना था क्या? मग काय, तुम कॉपी भी कर सकते हैं. तुम कॉपी भी करे होगी तुमने.
बिल्डिंग इज द फिक्स्ड एसेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे क्या? बिल्डिंग इज द फिक्स्ड एसेट. It should be 0.068 and something ना बाड़ा. इसका राउंड ऑफ किया है मैंने. 68 के आगे क्या है देखो ना. 68 के आगे क्या है देखो. तो ठीक है, चेंज करो. Okay, now I want your complete concentration. I now want your complete concentration. ये 69 नहीं है, 68 है क्या? Is this 68 or what? Is that 68 or what? 66.8. So 668 should be the answer, na? 668 should be the answer. 668 is the answer. Very good. Very good. Now I start with the next question. अगर तुमने ये किया है सचमुच में, तो फिर मेरे तरफ देखो. I am going on to the next type of next variety of question. To find minimum height of tallest people, maximum height of shortest people, to find the mini of tallest and maxi of shortest. And this is very true, because what is mini for the tall people will become whole. Sir, 1 second, I have a doubt. क्या हुआ? Sir, I have a doubt. I didn't understand. What? In the second question, now, probability we get 0.0668 and percentage we get 6.68. Oh. So for number of people, what do we do? What do we multiply by? Or a number of people, there are 1,000 people, my dear. 0.0. No, sir. So 1,000 will multiply with we'll multiply 1,000 with the percentage or the probability. Probability. ये दोनों अलग parts है. These are the two separate parts. So it should not be 668. So 0.0668 will do into 1,000. So that is only 68. That is only 68. Yeah. Yeah. Good, you asked. Yeah. Is it not 668? Okay, It's just 68. So the point I was telling was, this is quite obvious, that what is mini for the tall people is going to be the full maxi for the short people. बराबर ना? ये तो ऑब्वियस है. अभी तुम्हारे इसका टाइटल ध्यान में रहेगा, मिनिमम ऑफ टॉलेस्ट एंड मैक्सिमम ऑफ शॉर्टेस्ट. ये टाइटल अभी तुम्हारे याद में रहेगा. ये टाइटल तुम्हारे अभी याद में रहेगा. मिनिमम ऑफ टॉल एंड मैक्सिमम ऑफ शॉर्ट. राइट. तो अभी तुम मेरे तरफ देखो. अभी तुम मेरे तरफ देखो. लेट अस रीड. कोई लिखेगा नहीं. हम तुमको इनफ टाइम देंगे प्रॉब्लम को करने के लिए. तब तक कोई भी लिखेगा नहीं. तब तक कोई भी लिखेगा नहीं. हम तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार है बाद में. पहले इट्स टाइम टू लर्न, बिकॉज टू लर्न इज अ फन. तो अभी तुम मेरे तरफ देखो. अभी तुम मेरे तरफ देखो. अभी तुम मेरे तरफ देखो. Read the question.
Read the question. Read the question. What is given? Read the question and tell me what is given. Read the question and tell me what is given. It was found that the heights of soldiers, heights of 1,000 soldiers were normally distributed with the mean of 65 inches, standard deviation of 5 inches. My question to you is, what is normally distributed? What is normally distributed by no? What is normally distributed? Height. So I would say that the height x, nobody will write anything. Height x is normally distributed with the mean of what 65 and the standard deviation of 5. यहां तक तुमको समझा है क्या? ये उन्होंने दिया है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये उन्होंने दिया है. Don't ask from where did you get 65 and 5. It is given in the problem. Now, determine minimum height of 150 tallest people. So to find what? My question to you is, tell me to find what? My question to you is to find what? You have to find what? You have to find height. But height means x. But remember, table is made for z. So first we have to find z. Sequence देखो. We have to find height. But height means x. But before x we have to find z. Before x we have to find z. ये sentence का sequence देखो क्या है. Now remember, whenever we have to find the value of z, that day we discussed yesterday, that when you have to find that z, area, probability, or proportion, it means the proportion should be given. That proportion should be given. एक कुछ तो भी देना चाहिए ना, एक कुछ तो भी देना चाहिए. Z वैल्यू निकालना है तो फिर एरिया देना चाहिए. Z वैल्यू को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी देना चाहिए. But probability means proportion. And yes, the proportion has been given. The proportion has been given and it is 150 out of 1,000. And this 150 out of 1,000 comes to be 15%. Is 0.15. ये इधर तक तुमको समझाएगा. Proportion is given. Now my question is, tell me, is this of shortest people or tallest people? Is this of shortest people or tallest people? Is this of shortest people or tallest people? So this is the height of tallest people. Tallest people. अभी मेरे तरफ देखो कि ये tallest people x एक्सिस पे राइट साइड को होगे या लेफ्ट साइड को होगे. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे हाइट बढ़ेगी. And therefore, when I draw the graph, when I draw the normal curve, remember these tall people are the, in fact, tallest people will form the rightmost area. This will form the rightmost area. This is rightmost area. And therefore, tall people के लिए ये होगा ये rightmost area. See, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, पर एक बार समझो, एक बार समझो. नाउ ये जो एरिया है वो उन्होंने दिया है और वो उन्होंने दिया है 0.15, बराबर ना. ये उन्होंने दिया है that this is 0.15.
1 pi. This has been given and is given to be 0.15. Oh, madam. This has been given to be 0.15. ये जो एरिया है टॉलेस्ट पीपल का भारी दिखता ना एकदम, ये अच्छा दिखता है ना. This area has been given to be 0.50. But tell me, table is mean for what? It will be mean for 0 to z. Mind well, this z value we have to find. We don't know that z value. We have to find it. So tell me what will be the table value. It will be 0.5 minus 0.15, which is 0.35. Which is 0.35. And therefore, remember the probability means area between 0 and z is 0.35. तो ये 0.35 हमको अंदर देखना है, टेबल के अंदर देखना है. कल हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे. 0.35 यहाँ देखना है, तो लेकिन हमको एक वैल्यू उसके पहले की मालूम होना चाहिए और एक वैल्यू उसके बाद में. तो टेबल को निकालो और फिर बोलो मेरे को व्हाट इज द वैल्यू जस्ट बिफोर 0.35. Don't copy. Everyone will be searching in the table and find it out as to what is it. Find it out what is it. 0.35 के पहले वाली वैल्यू क्या है? Means it should be 0.34 something. It should be 0.34 something. बराबर ना? 0.34 something. ये अंदर देखो 0.34 something. So that is 0.3485. This value is 0.3485 and this is 3508. So क्या हो रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है वो है पॉइंट कितनी 3485 and this is 0.3508. अभी मेरे को बोलो यहाँ का डिफरेंस होगा 15 का और यहाँ का डिफरेंस जस्ट है 8 का, तो दिस इज क्लोजर वैल्यू. So this is closer value. हो गया मैडम. अभी उसके लिए 3508 के लिए और 3508 के लिए the value was 1.0 and this is 4. ये इसके लिए देखना है ना, तो this is 1.04. This is 1.04. Ajinkya is not 1.4 बड़ा, it is 1.04 and therefore this z value is positive 1.04. Why positive? Tell me. Tell me why positive? Because it's not negative. Because it's not negative. तो ये 0 के राइट हैंड साइड को है. पर टेल मी, आर वी इंटरेस्टेड इन z? Are we interested in z? Are we interested in z? No, we are interested in x. We are interested in taking x on z. We are interested in taking x on z bridge. बराबर ना? We are not interested in z. We are interested in x. तुमको समझा क्या? यहाँ पुणे में एक z ब्रिज है, z ब्रिज है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन x on z. तो ध्यान दे, अभी z मतलब क्या? z मतलब क्या? z is what? Is x minus mu upon sigma, and therefore x minus mu, but mu is 65 and that divided by this sigma is 5. This is 1.04. So this x is equal to 1.04 into 5 and plus 65. So tell me what is this? Tell me what is this? बाळांनो, ये तुमको समझने का है. Tell me how much is this? Tell me how much is this? This is 70.2 inches. This is 72 inches. अभी ये मिनिमम है
of tallest people. Tell me why is it minimum? Tell me why is that minimum? Because all tallest people are above age. All the tallest people are above this 70.2 inches. ये सब लोग ये 70.2 के ऊपर है तो ये मिनिमम हो गया. ये इसकी कट ऑफ वैल्यू हो गई तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया. बाय नो है तुम्हारा करेगा. तो फिर ये this is very important problem and take it for granted one problem like this will come in some of your attempts. One problem like this may come and will come in some of your attempts. हाँ, अभी यहाँ मैंने ये हाइट के बारे में बोला, वो इनकम हो सकता है, वो वेट हो सकता है. Situation can change, but procedure is same. समझा है क्या? Situation can be different, but procedure is same. बयान नो ये तुमको समझा है क्या? तो this is the minimum height. This is the minimum height of those 15% tallest people. Those 15% tallest people. This is the basic idea. वापिस करूं, रिपीट करूं या तुमको समझा है? रिपीट करूं या तुमको समझा है? रिपीट करूं या तुमको समझा है? खुशी. ओके, आई रिपीट. हमको तुम पे यकीन है तो हमें यह पूरी तरीके से पता है कि ये हमको रिपीट करना है. देखो मेरे तरफ, देखो मेरे तरफ. Height is normally distributed. Height is not normally distributed. So height is x. That follows normal distribution. With mu is 65 and sigma is 5. खुशी बाया तो तुमको इतना समझा क्या? Now they want us to find height. To find height. But height means x. But before x we find z. And to find z, area, proportion, probability should be given. Otherwise you can't find, but something must be given. It should be given. And they are saying that this proportion is 150 out of the 1,000 people. That means this is 0.50. Means it is 15%. And because these are the tallest people, it is the rightmost area. It is the rightmost area. खुशी इतना समझा क्या पड़ा तुमको? Very nice. तो फिर अगर मैंने ये नॉर्मल कर्व को निकाला तो फिर इसका जो राइटमोस्ट एरिया होता है वो है 0.15. ये है 0.15. इसका जो राइटमोस्ट एरिया है वो है 0.15. ये तुम समझने की कोशिश करो कि राइटवर्ड एरिया ये जो है वो है 0.15. But we are interested in between, na? And therefore if this is the rightward area, then my question is, tell me how much is this area? So this will happen to be 0.5 entire half part minus this is 0.15. This is 0.35 because this was 150 over 1,000. That was 0.15. तो टेबल वैल्यू में हम सर्च करेंगे 0.35 के लिए. टेबल वैल्यू में हम सर्च करेंगे 0.35 के लिए. वैल्यू बिफोर दैट वाज 0.3485. वैल्यू आफ्टर दैट वाज 0.3508. तो यह 3 यहाँ का डिफरेंस है 15 का, बट यहाँ का डिफरेंस है सिर्फ 8 का, तो हम ये पिकअप करते हैं. तो ये वैल्यू थी 1.0 और फिर ये कितना था 4 ना. एंड देयरफॉर ये जो z वैल्यू हमें मिला है वो क्वेश्चन मार्क था, बट वी हैव गॉट दिस इज 1.04. बट x minus mu upon sigma, so x minus, see z is equal to what? X minus mu upon sigma.
So x minus 65 over 5 is 1.04. So x is 1.04 into 5 and that plus 65. Now that x comes out to be, what did we get? 70.2 inches. And this 70.2 inches is the minimum height of 150 tallest people. 150 tallest people. मैंने बोला कि ये टॉलेस्ट का मिनिमम इसलिए है कि सब टॉल पीपल इसके ऊपर है. अरे व्हाई इज दिस राइट मोस्ट एरिया कसं व्हायचं रे. अगर तुमने इनकम को कंसीडर किया तो रिच पीपल कहाँ होंगे. यहाँ इनकम बढ़ता जाता है, वहां इनकम कम होता है, तो पुअर पीपल विल बी हियर बर का, आणि रिच पीपल विल बी हियर. Similarly, tall people will be here, short people will be here, clever people will be here, dumb people will be here. यार ये कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस है ना. थोड़ा तरी सोचो, थोड़ा तरी सोचो, सोचो तुम जरा तरी क्रिएटिविटी दिखाओ. ये राइट मोस्ट एरिया क्यों है? क्योंकि टॉल पीपल आर ऑन राइट, पुअर शॉर्ट पीपल आर ऑन लेफ्ट, रिच पीपल विल बी राइट, पुअर पीपल विल बी ऑन लेफ्ट. ऐसा होगा तुम्हारा, थोड़ा भी नहीं सोचेंगे. प्रोफेशनल बनना है आपको तो सोचने की आदत डालना पड़ेगा. ओके, ये पहला पार्ट तुमको समझाने के बाद अभी एग्जाम में इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं. एग्जाम में इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं. यही प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आता तो मैं क्या करता, आई विल डायरेक्टली ड्रॉ द कर्व. आई विल नॉट डू दिस मेनी थिंग्स. ये मिनिमम ऑफ टॉलेस्ट, ये अपनी सिचुएशन हो गई ना. तो डायरेक्टली आई विल से टॉल पीपल आर हियर. दिस एरिया इज 150 out of 1000 means this is 0.15. So this much is 0.35. Directly I search for this 0.35, then 0.3485. There is 0.3508. Then I see this is a value. So 1.04. So this z is 1.04. So x minus 65 over 5 is 1.04. So x is 1.04 into 5. 1.04 into 5 plus 65. That's answer 70.2. मैं इतना शॉर्ट में करूंगा एग्जाम में. एग्जाम में इतने शॉर्ट में करूंगा. एग्जाम में शॉर्ट में करो. काय काय माहिती का कि अगर एग्जाम तुम्हारी है जून 22, जून 23 को, तो फिर वहां बारिश होगी, बारिश होगी है कि नहीं. तो फिर फुल पैंट पहन के जाएंगे तो फिर वो गीला होगा तो प्रॉब्लम होगा. इसलिए गो इन शॉर्ट, गो इन शॉर्ट. गो इन शॉर्ट. करो. पहला पार्ट तुम पूरा करो, मैंने तुमको वर्क दिया है. ये डिस्क्रिप्शन लिखो, लेकिन एग्जाम में फिर शॉर्ट में मैंने कैसे किया वो भी लिखो. शॉर्ट मेथड भी लिखो. पहले डिस्क्रिप्टिव है, क्लासिकल है, बाद में फटाफट है.
उनको स्कर्ट का मतलब पता है क्या? इशिका आस्क्ड व्हाई नॉट इन स्कर्ट। तुमको स्कर्ट का मतलब पता है क्या? तुमको स्कर्ट का मतलब पता है क्या? क्या है स्कर्ट का मतलब? स्कर्ट का मतलब है, स्कर्ट का मतलब है स्टूपिड, स्टूपिड, कीप इट, keep it right to the point, right to the point. Good. Stupid, keep it right to the point. Marka Ishika. Ishika. हो गया है क्या बाळांनो तुमका? ये तुमका हो गया है क्या? Very good. Very, very good. In that case, I'll come to the second part of it. ये रब करूं क्या मैं? अगर ये तुमको समझा है तो मैं इसको रब करूं क्या? हाँ, तो फिर अभी सेकंड पार्ट के लिए मेरे तरफ देखो। अभी मैं इतना सारा लिखने वाला नहीं हूँ, शॉर्ट में एग्जाम स्टाइल। Maximum height of 130 shortest people. My question to you is, where are the shortest people? Where are the shortest people? Extreme left. Extreme left, leftmost. So here are those leftmost people. Shortest people are on the left. And therefore, this area is given. These are the shortest people. And these shortest people are given and given to be what? 130 out of 1000. Means this is equal to 0.13. That's 13% shortest people. These are the 13% shortest people. But if that is true, tell me this table value is what? It will be 0.5 minus. This is 0.30, which is 0.37. Mind well, we have to find this value of z, but on the left side z is negative. On the left side z is negative. So 0.13 का अगल बगल की वैल्यू देखो क्या है? 0.13 की 37 की अगल बगल की वैल्यू देखो। एक होगा 0.36 समथिंग और एक होगा 0.37 समथिंग। तो 36 क्या है देखो? 3686। और बगल की वैल्यू क्या है? ये अगल की हो गई, बगल की क्या है? This is 3708. So this is just a difference of 8 where this is 14. So ये ट्रू है। अभी ये वैल्यू कितना है बोलो? इधर 3708 के वास्ते ये वैल्यू कितना है? This is 1.1 and this is 3. So z is, don't forget, minus 1.1 because it is left of 0.
it is minus. Since it is to the left of 0, it is minus. Therefore, x minus 65 over 5 is minus 1.13. So x is minus 1.13 into 5 and that plus 65. Whatever you get, it is the maximum of shortest. It is the maximum of shortest. करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने में कोई मजा नहीं है, प्रोसीजर को समझो। तो 59.35 इंचेस करो, इसको तुम पूरा करो, इसको तुम पूरा करो। नहीं पूरा करेंगे तो फिर जिंदगी भर पूरी करनी पड़ेगी, किसी होटल में जाके जिंदगी भर पूरी करनी पड़ेगी। भारी ना, कड़क ना, कड़क ना। करो।
हो गया क्या तुमका बाळांनो? ये तुमका हो गया? ये हो गया। तो एक बात यहाँ समझने की तुम कोशिश करो। तुम यहाँ एक बात समझने की कोशिश करो। Nobody will write anything. You want minimum of tallest. You want this crossword minimum of tallest and maximum of shortest. Maximum of shortest. एक मिनट मेरी तरफ देखो। ये जो टॉल होते हैं इनका मिनिमम लगेगा और जो शॉर्ट होते हैं उसका मैक्सिमम लगेगा। तो ये क्रॉसवर्ड होता है, यहाँ का इधर और फिर यहाँ का इधर। है बाद में तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? हो बेटा, ये तुमको समझा है क्या? हो असं बेटा, हो असं, हो हो असं। Abhi, add one more part to the same question. I want you to add one more part to the same question. Come on, write down. Write down. Between what limits of height? What limits of height do the 50% middle height people or middle class people lie? Middle class people lie. Add one more part to that. 50% middle class people lie. Between what limits of income or what limits of height do the 50% middle class people lie? अभी इसको समझने की कोशिश करो। इसको समझने की कोशिश करो। Remember, when I consider this, tall people will be left, right? Short people will be left. And where are the middle class people? Tell me, where are the middle class people? Where are the middle class people? Where are the middle class people? यार बोला ना, where are the middle height people? कहाँ गए सब? Where are the middle class people? They are exactly at the middle. They are exactly at the middle. So if you want the middle class 50% people, 25% must come from here and 25% must come from here. That is how you get the 50% middle class people. That is how we get the 50% middle class people. So I had to find the value here, suppose it is Z1, and I had to find the value, suppose it is Z2. Then remember, this itself is the table value. This itself is the table value. 0.25 is itself a table value. But Z negative here and positive here. तो 0.25 के अगल बगल में ढूंढना चाहिए। 0.25 के पहले 0.24 होगा कुछ तो भी, and 0.25 के बाद होगा 0.25 something. You have to pick up the value. पान नो तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? But very easy questions, but once you have to learn कि नहीं, so tell me what is this value? 0.2486. And what is this value? 0.2518. Therefore, here is the difference of 18 and here is the difference of 14. So this is better. अभी ये वैल्यू है 0.6 और ये वैल्यू है 7.
So it is 0.67. यार तुमको देखा कि मिला क्या वो, तुमको ये मिला क्या बात तुमको? तो फिर ये भी 0.25 है और ये भी 0.25 है, तो दिस वैल्यू इज सेम, only difference is that this is negative, that is positive. This is negative and that is positive. बाद में समझाएं क्या? This is negative and that is positive. And therefore, here what happens, x minus 65 over 5 is minus 0.67. And here x minus 65 over 5 is plus 0.67. So this x is equal to minus 0.67 into 5 plus 65. And here this x is 0.67 into 5 plus 65. तो tell me ये x कितना मिला और ये x कितना मिला? Tell me ये x कितना मिला? This is very 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 easy question, but एक बार तो समझना चाहिए. बोला कि दिया? This is 61.65. 61.65 inches. 2. What is this? 2. What is this? 68.35 inches. And therefore, the middle 50% people lie. The middle class 50% people lie. Middle class 50% people have height between the range, interval, range 61.65 inches to 68.35 inches. ये हमें इंटरवल मिला है, ये हमें इंटरवल मिला मिडिल क्लास लोगों का, ये मिडिल क्लास लोगों का हमको ये मिला है इंटरवल. हे तुम्हाला कळलं का बाळांनो? ये तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? और तुमको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ समझनी चाहिए. Of course, that is not the part of the question, but this is just an aptitude that you have to develop. That this is 0.25, this is 0.25. That means this is also 0.25. This is also 0.25. So these are the 4 equal parts. So this value is nothing but the first quartile, and this value is nothing but the third quartile. Exact area है कि नहीं? So these are the values nothing but first and third quartiles. यारे तुम्हारे को तो कहे. So this is also this is the first quartile of x, and this is the third quartile of x, and in between that Q2 is nothing but the median, and that is given to be 65. Middle value is given to be 65 for x. For z it is 0, but for x it is 65. So Q2 is 65. थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनसाइट डेवलप करो, एडिशनल. भारी है कि नहीं है? ये भारी है कि नहीं? और तो अब तुम पूरी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन तुम करेंगे क्या? तुमका करो. I have given you the time. I have given you the time. तुम इस क्वेश्चन को तुमका करो. Marks of the students are normally distributed with the mean and variance is given, and minimum score of 21% of students and maximum score of 70%, 17% weak students. Try करेंगे. Tell me what is normally distributed.
Tell me what is normally distributed. Moyana, what is normally distributed? What is normally distributed? What is normally distributed? Bolo. What is normally distributed? Marks. So my opening statement is that marks means X normally distributed with the mean 70, of course in percentage, and sigma variance is 100, means sigma square is 100, means sigma is 10. बाया नो ये परसेंटेज ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसका मतलब 70/100 ऐसा नहीं होगा, जैसे वो सेंटीमीटर इंचेस था वैसे ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो 70 and 10. We find the minimum of 21% top, maximum of 17% weak. करेंगे तुम अपना अपना, कोशिश करेंगे अपना अपना, करेंगे कोशिश, क्या करो तर करेंगे कोशिश, प्रकाशिका मिलेगा आशीष, करेंगे कोशिश इशिका तो मिलेगा आशीष. करेंगे कोशिश तो मिलेगी कोशिश. बेटा तुम करेंगे कोशिश तो तुमको मिलेगी कशिश, हमने की थी हमारी हवा, इसलिए हमें मिल गई पूर्वा. हमने की थी हवा इसलिए हमें मिल गई पूर्वा. मूग गधा किती दिवसांनी भेटली बाळा, मूग गधा, मूग गधा किती दिवसांनी भेटली. हॅलो बाळा. करो पटकन. We are very sure of what we are doing, so you have to do it quickly. Bright students will be on extreme right.
So this is 0, extreme right. And this area is, tell me what? This area is, tell me what? This area is what? So this area is 21%. And 21% means 0.21. So tell me this table value is what? Is 0.5 minus 0.21. This is 0.21. कितना सोपा है देखो. तो फिर टेबल में सिर्फ ढूंढने का है तुमको कि 0.29 के अगल की वैल्यू, बगल की वैल्यू. फिर z निकालो. This is 0.2881. This is 0.2881. And what is this? 0.2910. तो यहाँ डिफरेंस है 10 का, यहाँ डिफरेंस है 19 का. तो I pick up this. So what is this value? What is this value? 0.8. And this is 1. So this z value is positive 0.81. So x minus 70, that over 10 is 0.81. So x is 0.81 into 10 and plus 71. So what is this? This is 70 actually. So 78.1, no? 78.1% is the minimum of top students. Minimum of the top students. And 70 दिला है ना. तभी मैं एक्सप्लेन किया तो मेरे तरफ देखते ही नहीं है जानवी ब्रो. मैंने तुमको बोला था कि ये परसेंटेज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. How many marks you have got? You say 70%. Does that mean 70 out of 100 means 0.7? Does that mean 0.7? Are this percentage is the unit of measurement. You're not talking about the area there. And that is what I have written, that this is 78.1%. Like height was in inches. This is in percentage. तो फिर अभी इसी डायग्राम में मैं सेकंड का भी पार्ट कर देता हूँ. Where are the weak people? Tell me, where are the weak people? तर आम्हाला काय माहिती म्हणून तुम्हीच सांगा. हमको क्या पता वीक पीपल का हो. हम तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो है उनके तरफ ही देखते हैं. जो स्ट्रॉन्ग है उनके ही तरफ देखते हैं. वीक की तरफ हम क्यों देखेंगे? बराबर नहीं शिका. केमिकल इंजीनियर है तो हम देखेंगे, लेकिन वो आईटीआई में है तो क्यों देखेंगे? तो हम क्यों देखेंगे? तुम ही बोलो. हम ही बोलते हैं. तो वीक पीपल are going to be on extreme left. Are going to be on extreme left. And therefore, tell me what is the percentage of these people. Tell me what is the percentage of these weakest people. That is 17%. So this is given to be 17%. Means this is 0.17. So this table value is going to be 0.5 minus 0.17, which is 0.33. तो 0.33 के लिए ढूंढो. 0.33 के लिए ढूंढो. ढूंढो ढूंढो रे साजना. ढूंढो रे साजना. Point 17 के अगल बगल ढूंढो. This will be 0.16 and this will be 0.17. Sorry, this is 0.33. This is 0.33. हम तुम्हारा concentration check कर रहे थे.
वेलकम। वैसे तो हम गलती करते नहीं हैं, पर हमें तुमका सिर्फ कंसंट्रेशन चेक करना था। तो फिर मेरे को बोलो ये पहले वाली और दूसरी वाली देखो, जो ज्यादा नजदीक है, करीब है, उसको चूज करना है ना। ये वाली झाली की नहीं, पहले वाली देखो, दूसरी वाली देखो, जो ज्यादा नजदीक है उसको चूज करो। चूज नहीं, चूज करो, उसको चूज करो। अभी समझेगा तुमको, अभी ये ध्यान में रहेगा। बोलो क्या आया वैल्यू जेड का? विच वैल्यू डिड यू पिक अप? 3 2 कितना था? 8 9। दिस इज 3 2 8 9 एंड दिस इज 3 3 1 5। तो यहाँ का डिफरेंस 15 का है, यहाँ का सिर्फ 11 का है। So I pick up this. So what is this? What is this? 0.9 और फिर 5. But this is on negative side. So this side is minus 0.95. So x minus 70, that over 5 is minus 0.95. So x is minus 0.95. That into 5 plus 70. बोलो ये कितना होता है? Is that 60.5%, and that is maximum of weak students. Maximum of weak students. बाळांनो तुमको समझा है क्या ये तुमको समझा है क्या? I'm sorry, this is 10. I'm extremely sorry. यहाँ हमने deliberately गलती नहीं की है. This is 10. तो ये बदलेगा जरा सा, और आंसर वही होगा, बट आंसर तो वही होगा. This is 10 actually. होगा, तो आंसर कितना आया? 60.5% is the maximum of weak people. Very nice. ये हमारा मैजिक है, ये हमारा करिश्मा है, ये हमारा करिश्मा है. हमने बीच में कुछ गलत भी किया तो भी एंड में हम करेक्ट ही रहते हैं. एंड में हम करेक्ट ही रहते हैं. लगा? बीच में हम कोई भी गलती करते हैं तो फिर आखिर तो हमारा अच्छा ही होता है. अभी हम तुमको एक क्वेश्चन देते, तुम करेंगे क्या अपना अपना? हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, तुम अपना अपना करो. आई विल गिव यू द क्वेश्चन, करो. करेंगे ना अपना अपना? करो. बिटवीन व्हाट लिमिट्स? बिटवीन व्हाट लिमिट्स? करो. बिटवीन व्हाट लिमिट्स? Between what limits? Do the 40% middle category people lie?
middle category students lie. Category means what? Tell me. Category means what? Category means what? Category म्हणजे बिल्ली गोरी है. Category. बिल्ली गोरी है. Category. Category. पण बोका है काळा. कैट है गोरी, बोका है कारा. John F. Kennedy, when he became the president of USA. John F. Kennedy, when he became the president of USA, he was a dark category person, black person. Not in racism, but this is the fact. So he was the dark-skinned person, and one girl with absolutely fair skin met him, and she said, "Berka," she told to John F. Kennedy, "Sir, you are so brilliant and intelligent. You are so brilliant and intelligent, and I am so fair looking, so beautiful looking. Let's marry and see how brilliant and fair looking will our child be. Let's get married, and our child will be very handsome and intelligent like you." John F. Kennedy answered, "What if the things are reversed? What if the things are reversed? मतलब इंटेलिजेंस तुम्हारा लिया और कलर मेरा लिया तो क्या होगा?" That is the answer he gave to that lady. Very, very good. करो पटकन प्रॉब्लम करो. See, you have to keep reading the things. You have to keep gathering the information. I can tell you n number of such anecdotes in the lectures because reading was that much right from the beginning. ये थोड़ी मेरे को वो कैनेडी के गर्लफ्रेंड ने आके बोला था. उस लेडी ने थोड़ी मेरे को आके बोला कि ऐसा बोला कैनेडी. ये मैंने पढ़ा है. Keep on reading. You can become a good orator only if you are a well-read and well-informed person. क्योंकि ये एग्जाम्पल्स अपने आप स्पॉन्टेनियसली आपके सामने आते हैं. कुछ भी पढ़ो, बट पढ़ो, रीडिंग करो. बुक में जो मिलता है ब्रो, दैट इज द रियल नॉलेज यू गेट. इंटरनेट पे बहुत सारी लिमिटेशंस होती है. तो रेफर टू द बुक्स, रीड द बुक्स and basically retain those sentences, make a diary of those statements, make the diary of those anecdotes, make the diary of those thoughts. इसका collection करो.
उसका कलेक्शन करो. See, when you become chartered accountant, एक minute, when you become chartered accountant, you will not be only an auditor as the chartered accountants used to be there in the past. You have to become the manager. You have to become the administrator. So you will have to give the speeches in front of your employees, speeches in front of your clients. You will be invited to deliver the speeches at various places. And you cannot say, I cannot talk, I can do the work, but I cannot talk. I can make the audit and I can do the taxation work, but I cannot give a talk speech. You can't do that, you will lag behind. Oratory is the basic thing that you have to develop. Effective oratory, effective communication. And therefore, your attire must be very good. क्या पहनना है ऐसी फॉर्मल मीटिंग्स में और फॉर्मल गैदरिंग्स में, इसका सेंस होना चाहिए. नहीं तो ऊपर ब्लेजर आणि नीचे कैनवास शूज, ऊपर ब्लेजर टाई एंड नीचे कैनवास शूज नहीं चलेगा, नहीं एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा. ब्लेजर पहनना है तो किस कलर का पहनना चाहिए, टाई का नॉट कैसे करते हैं, वो समोसा नॉट बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, समझा क्या? ये देख देख के होता है. जानवी, सी द न्यूज, सी बेस्ट इज IPL cricket commentary, but commentary in English, not in Hindi. That you have to do. And see, you develop the accents and vocabulary as it is, spontaneously. It happens. Unknowingly, it happens. You don't have to take the special effort. You just have to look at the things, taking proper interest in them. Retain the things which are genuine. Retain the things which are possibly useful in the future. If not now, they should be useful in the future. Then gather them. Make a collection of them. You have to be the effective orator when you want to become an administrator, effective administrator, CEO of company you become. You will have to address the gathering. Address the gathering. You cannot say I'm weak at talking. अभी इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इफ यू आर वीक इन वन एरिया यू विल लूज द एडवांटेज. इट विल बी योर डिसएडवांटेज पॉइंट. प्लीज हो गया है क्या तुमका ये वाणंदो, ये तुमका हो गया है क्या? जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा इन द फ्यूचर. नॉट इमीडिएटली, not necessarily immediately, but in the future. Anyway, look at me. So I consider the normal curve. Then remember, because you want the 40% middle class people, central value is 0 here. So 0.2 must come from here. And 0.2 must come from here. So ये एरिया से भी है, बट यहाँ z वैल्यू निगेटिव है और यहाँ z वैल्यू पॉजिटिव है. तो 0.2 की तरफ देखना पड़ेगा, फिर उसकी पहले वैल्यू, उसकी नेक्स्ट वाली, फिर चूज करो कौन सी. What is that value? What is that value? We are almost towards the end of our lectures, these normal lectures. Revision we will have, marathon we will have, but as far as the regular lectures are concerned, we are almost towards the end. Welcome. तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा बीच बीच में, उसको फॉलो करो. 0.1985 and this is 0.2019. This is 0.2019. अभी मेरे को बोलो इसमें से क्लोजर वैल्यू कौन सी है. तो दिस इज क्लोजर. ये 19 का डिफरेंस था.
Abhi, what is the value? Tell me what is the value? 0.52. So on this side it is minus 0.52. On this side it is plus 0.52. So x minus 70 that over 10 is minus 0.52 and x minus 70 that over 10 is plus 0.52. So x is minus 0.52 into 10 plus 70 and here x is 0.52 into 10 and plus 70. So find out what is x here and what is x there. This is 64.8% to this is 75.2%. That is the interval you are getting. Check it out. That's the interval you are getting. हे बाळांनो तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? Very nice. तो अभी इसमें का अगला टाइप हम कल करेंगे. To find mu and sigma, this type we'll do tomorrow. Immediately tomorrow only we shall finish the short questions. तो सिर्फ theory रहेगी. Integration lectures I'm going to upload on the group that you can see, that you can view, and during the revision we'll do the practice even of that. So formally the syllabus would be completed. Okay. So for that matter you have to start working. For that matter make a planning. My suggestion is that measures of central tendency dispersion for 20 marks. Time value for 12 marks. Time value for 12 marks. Live lectures for 12 marks. Logical reasoning for around 10 to 15 marks. ये ऐसे करते जाओ. और ऐसे ये करते जाओ. समझा करो. समझा करो. ठीक है, but tomorrow we will not meet. You can do that tomorrow. We'll meet day after tomorrow and we'll finish it off. No problem. Tomorrow you can spend time in watching the videos. No problem. थोड़ा सा प्लानिंग करो. No, Monday at 10:15. Now here also the time is going to be 10:15 only. Monday 10:15 only. No problem. Tomorrow I'll give you off. You can see watch the videos. I'll send the integration lectures today. Okay? Okay. Goodbye, bro. Goodbye, Ajinkya. Goodbye, Yosh.